Assalamu alaikum, dear students of class 4th. Today we have topic life cycle with 3 stages. It means we have to study about the animals who have 3 stages in their life cycle. First stage is the egg. From the egg, young is produced. Young one develops into an adult, and adult lays eggs. Egg, young, adult. These are the 3 stages of life cycle of some animals. There are many animals who have 3 stages in their life cycle, like chicken, cockroach, and frog. Today we will study about the life cycle of chicken. We are going to study about the 3 stages of life cycle of chicken. A female chicken, hen, lays eggs, and inside the egg a chick develops, and chick comes out or hatched from the egg, and it again develops into a adult chicken. Let's study what happens inside the egg, how chicken is produced. During the egg stage, the chick develops inside the egg. The eggshell protects the chick inside it, and the yolk provides food to this developing chick. Eggshell protects the developing chick, and yolk inside the egg provides food to this chick. After 3 weeks, chick hatches, and the chick looks like its parents. यानी कि 3 ये आपके पास जो एग है, एग के अंदर चिक डेवलप हुआ है, एग शेल ने उसकी प्रोटेक्शन की है, एग यॉक ने उसको फूड प्रोवाइड की है। 3 हफ्ते तक ये डेवलपमेंट होती रही, और अब इस डेवलपमेंट के बाद एग के अंदर एक छोटा सा चिक, जिसे आप उर्दू में चूज़ा कहते हैं, वो बन चुका है। क्या होता है कि ये चिक जो है 3 हफ्ते के बाद इस अंडे से बाहर आ जाता है, और ये अपने पेरेंट्स जैसा ही दिखाई देता है, जो कि ग्रो करके अपने बिल्कुल अपने पेरेंट्स जैसा हो जाता है। अ फीमेल चिक और hen, it usually lays 1 egg each day. एक दिन में एक मुर्गी जो है वो एक अंडा देती है, और इस तरीके से आप देखते हैं कि ये लाइफ साइकिल कंप्लीट होता है कि hen lays egg, from the egg chicks are developed, and these chick develop into an adult. This is the complete life cycle of a chicken. Here are some interesting information for you, that newborn chicks have a hard lump on their beaks. Newborn chicks have a hard lump on their beaks called an egg tooth. यानी कि जो अंडे के अंदर जो चिक है, उसकी चोंच के ऊपर एक लंप बनता है, एक हार्ड हिस्सा जो है वो अपीयर होता है, जिसे हम एग टूथ कहते हैं, और इसकी मदद से ये जो एग है उसको तोड़ता है, और उसके बाद वो उससे बाहर आ जाता है. This was very important information for you. I hope you understand. Inshallah, next we will study about the life cycle of cockroach and frog. Thank you. Allah Hafiz.